Hello students, today in this video I am going to take a topic from class 11, that is trigonometric functions, where before going for the formulae in the trigonometry, as in the previous video we have studied about the angle, the measure of the angle, that is where we have studied 3 unit systems. Now I am just taking this particular chapter to the next topic, where we are going to find the trigonometric ratios of the angles which are more than 90 degree. That is when the angle is greater than 90 degree. So to find these values, let me tell you, when the angle goes beyond 90 degree, then it will be going to cross the first quadrant, it will enter the second quadrant, it may go to the third quadrant, it may come to the fourth quadrant. So these are the 4 different quadrants that we know. From 0 to 90 degree, we have already studied in class 10 that the angles that we took was 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. The values we know it very well. We are having for sine theta, we have the value for cos theta, we have the value for tan theta. That means we know about 0 upon 4, 1 upon 4, 2 upon 4, 3 upon 4 and so on. So those values are, we are having 0, 1 upon 2, 1 upon root 2, then we have root 3 upon 2, then we have 1, then 1, root 3 upon 2, 1 upon root 2 and so. And this way we know. Till class 10 we were having only the acute angles which are from 0 to 90 degree. Now we are going to take care of the angles which are more than 90. For that, to go for that trigonometric ratio, that is trigonometric ratio of that angle theta, where theta I am telling, this particular value will be going to have 2 faces. One, the basic one, we want to get the value. Along with that, we are also having the difference here, that is the new concept will come, that is sign of that value. Till now we were having only the positive and now we are going to have negative values also. For that, let me take care of first phase. We are going to take this sign. To get that sign of trigonometric ratios, I want you to see this thing. When we take the angles in 4 quadrants, let us take initial arm is here and the angle is ending in first quadrant. This is the angle in the first quadrant. It will happen, that means the angle, the terminating ray will go to the second quadrant. Let us say the angle is ending up to here. So we are having the angle more than 90, it is entering into the second quadrant, so we can have angle here. Then we can have the angle in the third quadrant also. Let us take here. Then the terminating arm will enter the third quadrant, let us say here. And if I go for the angle in the fourth quadrant, let us say it like this, let it be here. So we are having 4 different angles. I have taken 4 different angles. मैंने बोर्ड पे 4 एंगल बनाए हैं. एक एंगल को मैंने एक्यूट एंगल लेते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट में रोका, दूसरा दूसरे क्वाड्रेंट में, तीसरा तीसरे में और चौथा चौथे क्वाड्रेंट में. सो व्हेन वी से अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वी नो फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल, व्हेनेवर वी से द एंगल थीटा, वी टेक केयर ऑफ, एज वी हैव स्टडीड क्लास 10th में, आप लोगों ने सबने पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले पी बी एंड एच से ले रखा है. मैं भी उन्हीं को ले रहा हूं, उसको कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूं. P stands for इसके opposite side, let us say perpendicular, that is from that to the base. हम लोगों ने base के उसके ऊपर एक drop किया perpendicular. Hypotenuse is as it is. Same thing I am going to take here. Let us drop this perpendicular on the x-axis, drop this perpendicular on x-axis, drop the perpendicular and drop the perpendicular. So as we can see, the base is positive here. The perpendicular from top to bottom, if we see y-axis को अगर हम लोग लेते हैं तो ये पॉजिटिव में आएगा P. When we say the angle is entering into the second quadrant, the perpendicular still it is positive because ये measurement आपको यहाँ से मिलेगा.
बट ये जो एंगल का बेस है जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा रहा है, this particular base is becoming negative now. Now if I see that the angle is going into the third quadrant, perpendicular is again negative, base is again negative, and if I come to the fourth quadrant, perpendicular is negative, but base here we are taking positive, and apart from that hypotenuse सब में positive ही लिया गया है. So what I am taking here, let us say about first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Clear? And I am taking sine theta. Sine theta, we know the basic formula is P upon H. Then we have cos theta, which is B upon H. And I am taking tan theta, which is P upon B. So these are three basic trigonometric ratios which will help you. Now if I see the first quadrant में जो एंगल था वहां P पॉजिटिव, B पॉजिटिव, H पॉजिटिव, so it is positive upon positive, positive. This is also positive, this is also positive. When we come to the second quadrant phase, when we enter the second quadrant, base is negative, rest P and H are positive. So where P and H are there, it is positive, rest the things we are having negative. When we enter the third quadrant, P and B are negative. Both the negatives, when they come here, they will give you positive result. Otherwise, when individual they are there, will be going to have a negative answer. And when we come to the fourth quadrant, in the fourth quadrant only P is negative, base is positive, so this is positive, rest are negative. So the conclusion from this table we can see here, all trigonometric ratios are giving positive answer. Here we can see sine, we are giving positive answer. When we see the third quadrant, we are having tan, tangent, I am using tan, is giving you the positive answer. And if I see the last one, we are having cos. So the reason I will tell you why I am using red pen, मैंने लाल पेन क्यों यूज किया, I am using these alphabets now. These alphabets are A, S, T, C. You have to remember this thing. A, S, T, C. Either remember A, S, T, C, or this can be after school to college, add sugar to coffee, all silver teacups. जैसे भी हो आप इसको याद कर सकते हैं. And this can be remembered for the sign. That is, first quadrant all are positive, second quadrant sine is positive, third quadrant tan is positive, fourth quadrant cos is positive. So to do the rehearsal of this one, I'll take a question here. That is, if I ask you, if sine theta, let us say a question example I am taking. I'll write here. If sine theta is minus 4 upon 5, where theta is in third quadrant, I want to find the remaining trigonometric ratios. By the Pythagorean triplet, we can check for a triangle, if perpendicular is 4, hypotenuse is 5, base will be 3. By Pythagorean triplet or take the use of Pythagoras theorem, we can get this base. And if I ask you what will be cos theta, using the basic definition, base upon hypotenuse, done. Tan theta, perpendicular upon base, we can find cot theta, reciprocal of tan, done. If I say sec theta, it is reciprocal of cos, and if I go for cosec theta, it is reciprocal of sine. Now apart from this values, ये value तो हो गई, value वाला face आ चुका है, but we want to take care of this ASTC since it is in the third quadrant, and in the third quadrant only tan is positive, so tan will be going to get positive और उसका reciprocal positive होगा. ये दोनों होंगे positive, but these values will be negative. So this is how we can use this ASTC to get the sign of the trigonometric ratios. Now this is there in front of you. Apart from these values, apart from this sign, we have to take care of these values also. If we are getting a trigonometric format where perpendicular, base and hypotenuse are given, you can use your Pythagorean triplet or Pythagoras theorem to get the value. Otherwise,
if we have to use these values, then we have to remember, first I am telling you a trick and then I will tell you the reason. The trick is, when we use the angle which is more than 90 degree, let us say if theta is more than 90 degree, then theta can be written as a multiple of 90 degree plus or minus one acute angle. ये हमेशा होता है. And when we say about a multiple of 90 degree, there will be two phases. Either the angle will come on x-axis or the angle will come on y-axis. ये मैं आपको यहां क्लियर कर दूं. If I take x-axis, that is this one, and if I take y-axis, that is this one. So angles on x-axis will be 0 into 90, 0 degree, then 2 into 90, then 4 into 90, then 6 into 90. So these are the angles which will come on x-axis, and the angles on y-axis means it will be 90, 1 into 90, 3 into 90, 5 into 90, then we have 7 into 90, so on. So these are the angles. I'll draw this one like this. So in this way, we can go with that anti-clockwise rotation. We'll be crossing either x-axis or y-axis. So when the angle is more than 90, we will have to take the help of either x-axis angle or y-axis angle. Then only we will be going to get this acute angle. So one trick, for time being I am going to tell you, if we use the angles of x-axis, trigonometric ratio remains, trigonometric ratio is same. I am just telling you a trick that you can remember. Use the angle, if we are using the angles of y-axis, then trigonometric ratio changes. Clear? This I am rubbing. Changes means sine will be interchanged with cos, tan will be interchanged with cot, and cosec will be interchanged with sec. So this you have to keep it in mind. Time being, बेटा जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया, मैं आप लोगों को अभी इस ट्रिक को यूज करना सिखा रहा हूं. एक बार यूज करना सीखेंगे, फिर अभी इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बता दूंगा कि इसका रीजन क्या है. तो एक बार पहले इसको चेक करते हैं. ध्यान दीजिएगा. इफ आई वांट यू टू फाइंड cos 120 degree, so there are two phases. One, I'll be taking the help of angles of y-axis 90 degree plus 30 degree, or I could go with the other phase cos 180 degree minus 60 degree. बेटा ध्यान दें, हर बड़े एंगल को जो 90 से बड़ा है उसको तोड़ने के लिए आपको एक एक्स एक्सिस यानी 90 का मल्टीपल प्लस एक एक्यूट एंगल लेना पड़ता है. अभी मैंने यहाँ पे आपको लिया है, तो ये देखिए आप, मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ. ये y एक्सिस का एंगल है और ये x एक्सिस का एंगल है. मैंने यहाँ पे आपको बताया अभी, x एक्सिस के एंगल का प्रयोग करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहने देना. तो ये x एक्सिस का एंगल है, मैं इसको cos रहने दूंगा, पीछे वाला एंगल एज इट इज लगा दो. दिस इज द ट्रिक. एक्यूट एंगल वही रहने देना, हम लोग उसको सेम करेंगे. नाउ इफ दिस द एंगल इज ऑफ y एक्सिस, देन साइन मस्ट बी चेंज टू cos. क्यों होता है वो भी बता दूंगा आप लोगों को. अभी क्या आ रहा है, दिस इज कमिंग sin 30 is as it is. Now this angle was in which quadrant? Second quadrant. Second quadrant में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए दोनों के दोनों माइनस होंगे. ठीक है, कन्वर्ट होने के बाद you can check what is sin 30. Sin 30 is 1/2. So answer is minus 1/2. This one is again minus 1/2. If you can check for cos also, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 है. So this is how we can find the value, and we can take care of ASTC also. For one more example, I am going to take
The same funda. That means let us say one more angle. I am taking one angle in the third quadrant. Let us find tan 225 degree. I want to find 225. If you don't want to take tan, we can take sec also. Doesn't matter. Sec 225. So there are two faces again. One face is I am taking sec. It is 270 degree minus 45 degree. Or we can take sec. This becomes 180 degree plus 45 degree. In both the cases, we will be going to get 225 degree. So what we are going to see that this angle was from y-axis, this was from x-axis. अगर ये x-axis का है तो रेशियो सेम रखना बेटा. I'll write sec 45 degree. If this one is there, y-axis है तो sec बन जाएगा cosec 45 degree. This is degree. Clear? Now value sec. Sec 225. 225 is in the third quadrant. Third quadrant में sec negative होता है, so we will be going to get a negative sign. तो हमने साइन को भी चेक कर लिया. हम वैल्यू तो वहां से लेंगे वो वाले टेबल से. तो यहां से वैल्यू क्या आएगी? इट इज cosec. Cosec means sin 45 degrees 1 upon root 2. So cosec is root 2. So answer is minus root 2. This one is minus root 2. We are getting the same answer, and that thing we have to keep it in mind. Ki whether we are using the angles of x-axis or we are using the angles of y-axis. So now this you have to practice. So you can practice for say tan 300 degree. If you want to do the practice, you can do that one also. I'll ask you to find cos 330 degree. We can find sec 150 degree. So for practice, you just do these questions so that you can get this trick. Now the important part जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा क्यों होता है कि that we are changing the trigonometric ratios when we use the angles of y-axis. For this, I think this you can note it down. So as I told you that trigonometric ratio will change. मैं उसका reason आपको बताता हूँ. See that when we take one angle which is entering into the second quadrant, let us say 120 degree. अब इसके दो faces हैं. I can take this angle to be, this is a very big angle. Let us take this angle to be theta. Clear? So this big angle will be written as 180 degree minus theta. Clear? The angle has started from this point A and it has ended to B. Okay. So now you see, if you find sin 180 degree minus theta or cos 180 degree minus theta, मैं एक बारी चेक करता हूं. ये 180 डिग्री माइनस थीटा जो है ये शुरू यहां से हुआ, एंगल पहुंचा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप किया जाएगा. मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं. इसका नाम है P, ब्लैक पेन से हम लोगों ने बना दिया. इसका हाइपोटेन्यूज H है. मैं जानता हूं दिस इज P अपॉन H. और ये भी हम जानते हैं, इफ आई गो फॉर कॉस, दिस इज बेस. इसका बेस इधर आ चुका है. इसका बेस बेटा उसके अकॉर्डिंगली नेगेटिव है, तो ये आएगा माइनस बी अपॉन एच. ये वन फेस हुआ. इफ आई कम टू दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, एक काम करता हूं मैं यहां पे इस एंगल को ब्लैक कलर से हटा के मैं इसको रेड से लिख देता हूं. नाउ सी ओनली दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, डोंट वरी अबाउट दिस माइनस साइन. नाउ इफ आई आस्क यू इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल व्हाट इज साइन थीटा, इस ट्राइंगल में साइन थीटा होता है P और H, क्योंकि इसका एंगल की शुरुआत यहां से हुई है. और मैंने ये देखो एंगल कैसे लिया है, मैं यहां से इस एंगल की बात कर रहा हूं, इधर से यहां तक. तो इसका बेस तो यहां से स्टार्ट हुआ है. इट डजंट मैटर, वी आर हैविंग P अपॉन H. फॉर cos थीटा वी आर हैविंग B अपॉन H, है ना. इफ आई गो फॉर tan हियर, अगर मैं tan 180 डिग्री माइनस थीटा की बात करूं तो इसका परपेंडिकुलर ये रहा P. इसका बेस नेगेटिव था, तो मैं यहां लिख देता हूं दिस इज P upon B, which is negative. Now you just compare these things. Tan theta, which is P upon B. Now if you see, these values can be easily replaced over there. यानी ये वैल्यू किसकी है, ये sin theta के वैल्यू में.
ये b अपॉन h ये यहां पे आप रिप्लेस कर सकते हो, दिस इज माइनस cos थीटा। अब यहां से देख सकते हो दिस इज p अपॉन b द सेम वन, दिस इज आल्सो सेम, सो दिस इज माइनस tan थीटा। नाउ आई वांट यू टू सी द कंक्लूजन फ्रॉम हियर। कंक्लूजन फ्रॉम हियर इज व्हेन वी आर यूजिंग 180 तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन का साइन ही रहा था, कॉस का कॉस रहा और tan का tan रहा। दैट वाज द रीजन। नाउ इफ आई गो विद द सेम फॉर्मेट, if I use the angle like this, big angle, I want to come to this particular angle, तो मैंने क्या किया, रेड पेन से तो मैंने लिया हुआ है, मैं यहां पे I want to find the value. Let us say the angle is this and I am taking one red color mark here, and this angle I have taken from this side and this I am telling you as theta. So what will be this big angle? So this big angle will be written as 90 degree plus theta. Now this is 90 up to here, we know it is 90 and this theta is added, this will become 90 plus theta. अब इसके लिए मैं आपको निकाल के बताऊंगा कि बेटा एक काम कीजिए, व्हाट इज साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, चेक करते हैं, व्हाट इज कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, ये भी चेक करते हैं, और ये देखते हैं tan 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है। तो अगर मैं यहां से चेक करूं, ये एंगल यहां पे आया है, दिस इज परपेंडिकुलर, P पॉजिटिव, दिस इज B कमिंग नेगेटिव, दिस इज H, डन। तो हमने क्या किया, हमने इसके फॉर्मूले को लिखा, दिस फॉर्मूला वाज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम लोग कॉस की बात करते हैं तो माइनस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan एंगल इज परपेंडिकुलर एंड बेस, सो इट इज P अपॉन B which is negative. Now you see this triangle where I am dropping this perpendicular over here, this is 90 degree, and see this one, if I take this particular triangle, this B and this is, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो इसको नाम हम लोग यहाँ पे अभी B लिख देते हैं, ठीक है, जो हमारे इस एंगल के अकॉर्डिंगली इसके ऑपोजिट साइड को हम लोग P के नाम से जानते हैं और इसका बेस यहाँ B है। तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में I want you to find sin theta. Sin theta इसका परपेंडिकुलर P है और हाइपोटेन्यूज H है, so this is P upon H. Cos theta इस ट्राइंगल में क्या होगा, बेस अपॉन, so this is B upon H. And if I want to find cot theta is base upon perpendicular, so it is B upon P. अभी पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारा एंगल यहीं से शुरुआत हुई है। अब आप देखेंगे एक्चुअली दिस P रेड पेन से लिखा है मैंने, ये P और B सेम है, यानी ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो B अपॉन H हुआ ना, और हमारा ये जो B है रेड पेन से जो B काम कर रहा है वो P है, परपेंडिकुलर है, सो वी कैन राइट P अपॉन H, एंड दिस B रेड पेन B is nothing but P, so we can write P upon B here. Now you compare, this is B upon H, can be replaced over here, so this will become how much, minus, what is B upon H, it is sin theta. Look at this conclusion, and if I go with P upon H is cos theta, so if we replace this one, this is cos theta, see that format, and this one P upon B is actually cot, so this is minus cot theta. आप देख सकते हैं, again the conclusion from here is when we use the y axis, that is हमने यहाँ 90 का हेल्प लिया है, 90 की हेल्प लोगे तो देखो क्या हुआ, साइन का बन गया cos, cos बन गया साइन, tan बन गया cot, so that will give you a conclusion, that is that वो जो ट्रिक हम लोगों ने पढ़ी थी वो ट्रिक बिल्कुल ठीक है, जहां पे हम लोग एक एक्यूट एंगल की हेल्प से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि इफ यू आर यूजिंग एंगल्स ऑफ एक्स एक्सिस then there is no change in the trigonometric ratio, but if you are using the angles of y axis, same we can do with the third quadrant also. If you want to come to the third quadrant, there are two phases, come like this, हम लोग इसमें दो फॉर्मेट बना सकते हैं, ये हमारा एंगल है, एक बार y एक्सिस के साथ लोगे, अगर मैं इसको थीटा कह रहा हूं तो ये एंगल कराएगा 270 डिग्री माइनस थीटा, आप चेक कर सकते हो, और यही अगर मैं आपको एंगल यूं समझा दूं कि आई वांट टू कम टू द थर्ड क्वाड्रेंट लाइक दिस, so I'll be going to write this angle as, let this be the angle and I'm taking this one as theta, so this will be written as 180 degree plus theta. So there are two cases. अब एक बार आप लोग जब y axis का यूज करोगे तो परपेंडिकुलर बेस में चेंज हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर में चेंज हो जाएगा, when we use angles of x axis they will remain the same. In this way you can do the practice
and you can use this trick and you can go with the next exercise of your textbook. Do the practice, and it's very important to, that is practice from your side is very important. What I can do, I can just explain you. So thank you very much for this video.